Hello everybody, welcome to ixam. This is Amrita, your law faculty at ixam. In this video, I'm going to continue with the previous year question series of SEBI Grade A Legal Officer Examination. Before we start, I would suggest you all do subscribe to our YouTube channel exclusively for law, that is Legal B, and stay updated with all such kind of beneficial videos. Also, you can visit our website for all legal and also other banking examination, other examination courses available at iXam. आपके कोई भी queries हो आप हमें सीधा इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो. You can write on this, you can call on this number. You can also write to us hello@ixam.com, and also directly write to us in the comment section of this video. We will surely try to come up with a solution on it. So this is the third video in the series of previous year questions. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सब्जेक्ट्स कवर किए थे, I had come up with 2 videos, constitutional law and law of contracts unit. Now in this video we are going to again discuss another very important subject, that is company law. कंपनी लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इसको मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है बिकॉज कंपनी लॉ हैज़ अ वेरी गुड वेटेज. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड आर आल्सो वेरी लार्ज. सो जो क्वेश्चंस हैं मैंने इनको 2 वीडियो के सीरीज में डिवाइड किया हुआ है. सो स्टे ट्यून्ड एंड take benefit of these questions from the previous year papers 2020 and 2022, including both the phases. चलिए स्टार्ट करते हैं syllabus से first of all, and then we can go to the exact questions that were asked. Companies Act 2013 phase 1 का syllabus अगर आप देखोगे, it is only having Companies Act, 15% weightage is there. And if you check out phase 2, the section has been named as corporate law. So we will be covering everything. We will also cover LLP and IBC along with Companies Act, and the weightage is increased to 20% in phase 2. So you can see it has a very good weightage, and अगर ये section आपका पक्का हो जाता है तो you can score really well in the examination. So you have to pay focus on this area. Number of questions, phase 1 से 7 या 8 questions आप expect कर सकते हो, and phase 2 से 10 questions you can expect. This can be +2 -2 also. This is the range that I am telling you कि इस तरीके से questions आ जाते हैं. इस वीडियो में हम लोग around 21 questions discuss करने वाले हैं, covering some phase 1 questions and some phase 2 questions mixed together. First question, what is a public financial institution? Life Insurance Corporation, Infrastructure Finance Company, as defined under Section 2, Clause 70 of the Companies Act, 72, sorry, A and C, all of the above. So direct question है ये, definition based, what is a public financial institution? And the answer is all of the above. ये सारे कुछ examples हैं, कुछ definition है, and it is defined under Section 2, Clause 72 of the Companies Act, जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉमिनल कैपिटल? नॉमिनल कैपिटल का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको डायरेक्टली, एंड ये भी आप देख रहे हो किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है. सेक्शन नंबर पूछा गया है, या फिर आपको कंसेप्ट रिलेटेड कुछ पूछा गया है, वेदर इट इज़ कंटिजेंसी कैपिटल, वेदर इट इज़ अ रजिस्टर्ड अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स, और नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज दैट इट इज़ अ कंटिजेंसी कैपिटल. Nominal capital is a contingency capital. All the above mentioned features that are given, that is not a contingency capital. All the rest of the options are correct and true about nominal capital. Only the thing that is not applicable is contingency capital. Nominal capital जो है ये contingency capital नहीं है. कई बार ये हो जाता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं we miss this not, and then we commit silly mistakes. So don't let this happen with you. Be very cautious when you are reading the question, very cautious. Then only you can score well and not do such kind of silly mistakes. What does appellate tribunal mean? Company law board, National Company Law Appellate Tribunal, High Courts are only acting as appellate tribunals, Central Government authorities act as appellate tribunal, State Company Law Tribunal,
So, which body is acting as the appellate tribunal? National Company Law Appellate Tribunal is acting as a company law as the appellate tribunal, and this is defined under Section 2, Clause 4 of the Companies Act. That National Company Law Appellate Tribunal will be acting as the appellate tribunal. तो ये भी काफ़ी easy question था. What are the maximum number of persons in a private company except a one-person company? 300, 250, 200, 500, 150. Now इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कंपनी लॉ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, जो नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड हो, या बेसिक कंसेप्ट्स, प्राइवेट कंपनी क्या है, वन पर्सन कंपनी क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन keep it under the category of expected questions, and the answer is 200. Section 2 clause 68 of the Companies Act provides for this. So section 2, all these clauses you can see are so very important. To start a public company, minimum and maximum how many directors can be appointed? 2, 10, 10, 20, 3, 15, 7, 600, minimum 1, maximum there is no any limited. For a public company, directors के appointment से related question पूछा गया है, and the answer is minimum 3, maximum 15. Section 149 आपको रेफर करना होगा Companies Act का for this purpose. Section 149(1) of the Companies Act requires that every company shall have a minimum of 3 directors. Be careful, they are not talking about members, they are talking about directors. Okay, कई बार हमें इसमें भी confusion हो सकता है. And maximum is 15. When 2 or more companies carrying on similar business decide to combine, a new company is formed. What is this known as? Absorption, external reconstruction, internal reconstruction, amalgamation, none of the above. Very, very important concept from company law. Amalgamation is the answer. Amalgamation is a concept by which companies can be carrying a similar business, and then they can decide and combine voluntarily, forming a new company. So the company that is formed newly, that is a result of amalgamation, and compromise, arrangement, all these things can be reasons for that. An application has to be made for merger and amalgamation with the tribunal, that is NCLT, for that purpose. Section 230 to 232 of Companies Act, you can refer for this. It is a charter of a company. It is a document which, amongst other things, defines the area within the company in which it can operate. The first step in the formation of a company is to prepare this document. What is this document? Now, I would say very easy questions are being asked. See this, they are talking about a charter of the company. Immediately आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा. इसके लिए आपको ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी easy and a very questionable concept. So everybody reads this when they are preparing company law. So section 4 covers this, and whatever features were described in the question that are directly picked up from section 4. आप इस वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज कर सकते हो, टॉपिक्स नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, एंड ट्राई टू pay focus on such kind of topics more. And also one thing you can do, you have the PDF of this PPT that is available along with this video. Description में जाकर आप इस PPT के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो. That can be very easy for you. Upper age limit of a chairman is 75 years, 70 years, 65 years, 62 years. There is no such limit. 70 years is the upper age limit of a chairman. This is also provided under section 196 clause 3 subclause A of Companies Act, that chairman की upper age limit होनी चाहिए, and that should be 70 years. Now coming to IBC, corporate law section में IBC, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 provides the duties of an interim resolution professional.
अभी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो कंसेप्ट है दैट इज़ IRP, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग कंसेप्ट है हम कह सकते हैं. सो यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो IBC में से. व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, दे हैव प्रोवाइडेड इट. तो ये तो बेसिक है, क्या होता है IRP, उनके ड्यूटीज़ क्या होते हैं, whether all of these are the duties, whether A, B and C is the duty, D is not, monitoring assets of a corporate debtor, managing its operations until the conclusion of corporate solvency resolution process, receiving, collating all claims that are submitted by the creditors to him, constituting committees of creditors, collection of information that is relating to assets, finances, operations. Answer will be all A, B and C. अगर आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखोगे सेक्शन 18 IBC कोड का, यू कैन टेक दिस डाउन एंड रेफर दिस. IBC में से सेक्शन 18 प्रोवाइड करता है डिटेल में व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. सो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है. यू कैन सी इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. Collecting information, receiving all the claims submitted by creditors, monitoring assets, file information and so on. आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा. Next question again from interim resolution professional. The IRP conducts first meeting of the Committee of Creditors within 7 days of constitution of committee, within 7 days of constitution of Committee of Debtors. अब यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, यहाँ पे कमिटी ऑफ डेब्टर्स है. विदिन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सर, विदिन 14 days ऑफ द अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, विदिन 14 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. सो आंसर इज A, विदिन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ द creditors. Section 28 provides for this. Appointment of resolution professional has to take place. The first meeting of the committee shall be held within 7 days of the constitution of the committee of the creditors. 11th question. Insolvency and Bankruptcy Code does not apply to. अभी एप्लीकेबिलिटी के बारे में है. एप्लीकेबिलिटी तो आपको जनरली इन एक्ट्स की पढ़ के जानी ही चाहिए. LLP की एप्लीकेबिलिटी, पार्टनरशिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, IBC की एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज एक्ट का तो वैसे हमें क्लियर ही होता है, बट स्टिल ये सारे एक्ट्स जो है ना इनके एप्लीकेबिलिटीज़ देखना ज़रूर आप लोग, ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना हो आपको. सो दिस इज़ एप्लीकेबल टू LLP, टू इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, बट नॉट टू अ डिपॉजिटरी. ईजी क्वेश्चन था ये भी. सेक्शन 2 अगर आप देखोगे यू विल बी वेरी क्लियर दैट टू what all things it is applicable. That does not include a depository. Advertisement of a prospectus of a company shall specify therein the object clause, liability clause, amount of share capital of the company, names of the signatories to the memorandum, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो जो एडवर्टाइजमेंट है प्रोस्पेक्टस का उसमें क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, दैट दे हैव आस्क्ड यू. नाउ अगेन प्रोस्पेक्टस, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंपनीज एक्ट इज प्रोस्पेक्टस ओनली. सो उसके एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आना चाहिए, दैट दे हैव आस्क्ड यू. सो कंटेंट्स ऑफ द MOA आर सपोज टू बी मेंशन्ड इन दैट. दिस हैज बीन पिक्ड फ्रॉम सेक्शन 30. एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बारे में है सेक्शन 30. यू कैन रेफर दैट. इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज क्रिएटेड बाय whom and under what? Now इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का जो कंसेप्ट है ये क्रिएट कहाँ से हुआ है एंड अंडर व्हाट इट इज डन. सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट, सेबी कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, Central Government SEBI Act, Central Government IEPF Act, Central Government and Companies Act. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. IEPF Act है तो मतलब ज़रूरी है कि IEPF Act कुछ होगा ही, and this will be the correct answer. It is not like that. Central Government creates it under the Companies Act. Okay, and Section 125 talks about this fund. What is the purpose of this fund and so on. A
Company may issue sweat equity shares of a class of shares that are already issued if authorized by a special resolution, and that shall specify offer price, current market price, total number of shares that are issued, both offer price and total number of shares issued, both current market price and total number of shares issued. अब sweat equity shares के बारे में ये question है. A company may issue sweat equity shares of a class of shares that have already issued it, authorized by special resolutions, which shall specify what? So the answer is both B and C. That is, E will be the answer. Current market price will be specified and total number of shares that are issued, that will be specified. And issue of sweat equity shares के बारे में आपको section 54 रेफर करना होगा कंपनीज एक्ट का. स्वेट इक्विटी शेयर्स पे क्वेश्चन आता है, कैसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के कुछ और आ सकता है, यही आएगा ऐसा नहीं है. But the concept and section you should note it down, that you have to go through it. What is a sweat equity share and so on. In case vacancy is created in the office of the key managerial personnel, then it shall be filled up by the dash within a period of dash. मतलब ये फिलअप कौन करेगा और कितने पीरियड में, अगर की मैनेजरियल पर्सनल की वैकेंसी क्रिएट होती है. It shall be filled up by the board within 6 days, board within 60 days, board within 6 months, shareholders within 6 months, shareholders and as agreed upon by the majority. Key managerial personnel के बारे में पूछा गया है. It should be filled up by the board within 6 months is the correct answer for this. Section 203 you can refer for this. ये भी direct question है key managerial personnel के appointment के बारे में. Section 203. A shelf prospectus is filed with the registrar and shall include a period as dash, and the period of validity of that prospectus shall commence from the date of opening of the first of our securities under that prospectus is. Now the question is big, but shelf prospectus, again I'm telling you, celebrated areas हैं ये सारी company law के. Prior to the issue of prospectus, prior to issue of prospectus 6 months. These options कुछ टेक्निकल एरर हुआ है यहाँ पे, दोनों ऑप्शंस सेम आ गए हैं. जस्ट इग्नोर दैट, फोकस ऑन द क्वेश्चन मोर. Prior to the issue of prospectus and not exceeding 1 year, at the stage of first offer of securities and exceeding 1 year, at the stage of first offer of securities and not exceeding 1 year. So the answer is E, at the stage of first offer of securities and not exceeding a period of 1 year. So first offer के stage पर, securities के first offer के stage पर होगा and the period should not exceed 1 year. Section 31 provides for shelf prospectus. Any class or classes of companies, as the Securities and Exchange Board may provide by regulations in this behalf, may file a shelf prospectus with the registrar at the stage of the first offer of securities, which shall indicate a period not exceeding 1 year as a period of validity. So ये है concept shelf prospectus का companies में, and ये Securities and Exchange Board provide कर सकता है regulations इसके behalf में कि shelf prospectus registrar से कब फाइल होगा, at the stage of the first offer of the securities, and it shall indicate a period not exceeding 1 year as a validity period for that. A company which has been in existence for dash cannot contribute any amount directly or indirectly to any political party. Less than 3 financial years, less than 3 calendar years, more than 3 financial years, more than 6 financial years, less than 6 financial years. अभी ये कंपनी जो है कितने सालों के लिए एग्जिस्टेंस में है ये आपको देखना होगा for fitting it into this criteria that it cannot contribute any amount directly or indirectly to any political party. Answer is less than 3 financial years. अगर कंपनी 3 financial years भी पूरे नहीं करती है, is less than that, then it cannot contribute. Section 182 provides for this prohibitions and restrictions regarding political contributions. An important concept. A dormant company is a company. What kind of a company is it? Company formed and registered for a future project. No significant accounting transaction. Inactive company. All of the above.
both A and B. Dormant का मतलब क्या होता है? Not that much active, sleeping. जैसे हम पार्टनरशिप में भी इसे देखते हैं, sleeping partner, dormant partner. So like that, company में अगर ये word use हुआ है तो what is the meaning? All of the above are true. It is going to be inactive. It is not having any significant accounting transaction. Maybe it is created for a future project or to hold an asset or an intellectual property only. So ये सारे options correct होंगे यहाँ पे. इसका कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो सेक्शन 455 में से. ये सब आप साथों साथ नोट डाउन कर लो अपने बुक्स में, जितने भी कंसेप्ट्स आपके आंखों के नीचे आ रहे हैं, व्हाटएवर यू आर व्यूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सेक्शन 445 टॉक्स अबाउट डोरमेंट कंपनी और ये सारे ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाएंगे. कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स फ्रॉम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, 20% of its securities premium account, 25% of its capital reserve, all of the above, both capital redemption reserve account and 20% of its securities premium account. कंपनी जो fully paid up bonus shares हैं उसके members को कहाँ से देगी, कहाँ से इशू करेगी? That is from the capital redemption account. जो आप कंपनी का कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर दिस ऑप्शन. बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं. अ स्पेशल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, not exceeding 1 year, exceeding 3 years, exceeding 5 years, not exceeding 3 years. Now ये question अगर आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. So just try to look for such kind of questions also जो directly पूछे जाते हैं, जो knowledge या memory based होते हैं, rather than having some concept in it. So कितना offense है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, स्पेशल कोर्ट कितना imprisonment दे सकता है for any offense, that you have to see if it is tried in a summary way. And the answer is imprisonment for a term not exceeding 3 years. That is option A. Section 436 talks about the offences that are triable by special courts. ऐसा आपको कुछ भी different दिखे अगर एक्ट में तो उसे पिक करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा. स्पेशल कोर्ट्स है, ऑफेंसेस हैं, समरी ट्रायल है या नॉर्मल भी अगर है तो ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोविजंस. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. A partner's interest in an LLP is transferable, partly transferable, wholly transferable, not transferable, both transferable or wholly transferable. So what will be the answer? LLP में पार्टनर का इंटरेस्ट आप ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं, और अगर कर सकते हो तो किस तरीके से कर सकते हो? आंसर इज ई. यू कैन ट्रांसफर इट एंड यू हैव टू ट्रांसफर इट wholly. Partners transferable interest, section 42 talks about it. The rights of a partner to a share of the profits and losses of the LLP, to receive distributions in accordance with the LLP agreement and transfer it either wholly or in part. And transfer of any right by any partner that is pursuant to this subsection does not by itself cause disassociation of the partner or a dissolution and winding up of the LLP. ये एक पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, अगर फ्यूचर में कभी यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनर का जो इंटरेस्ट एलएलपी में ट्रांसफर होता है, डज इट ऑटोमेटिकली लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी? नो, it shall not automatically lead to such kind of conclusions of the LLP, not company, sorry, LLP. Transfer of the right pursuant to this section also does not by itself entitle the transferee also, assignee also, to participate in the management of the LLP. Automatically they will not get rights to get involved in the management. जो भी ट्रांसफर ही होगा, जिसे पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, वो ऑटोमेटिकली उस एलएलपी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. He has to be a member of the LLP by way of agreement for that purpose. So this was all for today, and I will be coming up with another video continuing this series for company law, and after that another subjects as well. So stay tuned. And also you can come to us anytime. Me, Amrita Johar,
Neha Dubey and Vidika Bansal. We three are the faculty for legal. You can come to us for various subjects anytime. You can write to us at hello@ixam.com. You can also write to us whatever queries you are having. अगर आपको कोई सब्जेक्ट पर वीडियोस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. Do subscribe and prepare 50% faster with iExam. Thank you so much everybody.